then again in Amazon I refer a lot of people, but none make uh, the final selection. The whole point was that they were not prepared for those kind of interviews. Hmm. And I literally wrote all my stories on my on a book Hmm. copy, so that and I practice it. I took one whole day just for behavioral interview, but that is, it looks very small, but at the point of इसमें जिसमें आपने सिर्फ अपनी स्टोरियां बतानी है, Hmm. उसके लिए इट इज एक्चुअली गुड। लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, वही बिहेवियरल, उसमें ये पूछते हैं, उसमें कोई सही गलत आंसर नहीं होता। Hmm. उसमें ये होता है कि आर यू अ हार्ड वर्कर और अ स्मार्ट वर्कर। अगेन इट्स नॉट अ क्वेश्चन Hmm. जो वो पूछेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग एन Assalamualaikum, Osama. How are you? एग्जांपल। आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm great. Welcome to Campus to Career. थैंक यू। Okay, great. So let's dive right into this. And can you tell us a little bit about your professional journey so far? Uh, Professional journey, like I am software engineer for almost 10 years. Nice. I started at 2016. Hmm. When I was still in university, I guess in sixth semester, from a startup called Mujadidiya Incorporation. Hmm. There I was like a junior iOS engineer, hired as iOS engineer. So from there I started this journey, which is going on still. So most of my experience is in iOS, especially till joining Amazon. Hmm. Uh, Now in Amazon, it's mostly everything. Like in Amazon, you don't have this kind of, most of the time. It's not, they have this kind of very generic software engineer roles, Hmm. and then you have to work with whatever put forward in front of you. So in Amazon, I've been working with the and like on Android technologies, on a very low level system level technologies like C++, Rust, Hmm. and then React. Recently, I'm working with KMP, Hmm. iOS, Android. So that's what it is. Hmm. Yeah, that's, I guess, all about it, about my experience. Yeah, it's more towards mobile development, to be honest. But yeah, here and there, I've been looking into maybe a little bit of AWS backend and all that. Okay, that's nice. Feels like Amazon has given you a very hands-on role. You're diving into different things. Yeah, that's how it is. So Amazon mostly has services, like it's more service heavy. Hmm. We have apps, of course, every like yeah, Hmm. but normally they expect, especially, or I think in my org it was like more expected to have been like, you should be a software engineer rather than a dedicated engineer. बिल्कुल, So बिल्कुल. Okay, that's nice. Before we dive into your journey in Amazon, आपने mention किया that you were still in your sixth semester when you got your first job. So that's something that I found interesting. So how did that opportunity come about? Were you actively looking for mm, possibilities or yeah? मेरा मेरा थोड़ा सा जो जर्नी थी इन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, Hmm. I've been in NED. I was in NED. Hmm. तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स था डिपार्टमेंट, वहाँ पे मोस्टली ये था मेरा, लाइक in so in computer system, I don't know, अब I think they have changed curriculum a lot. Hmm. तो अभी उन्होंने क्या है, आई थिंक कि वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रोग्रामिंग बच्चों को दिखा देते हैं। ठीक है. हमारे Hmm. ज़माने में ऐसा था कि दे स्टार्टेड फ्रॉम द सेकंड सेमेस्टर, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा मतलब नर्ड टाइप का था Hmm. लड़का। की बात है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था अपने, एंड इट वाज लाइक आई ऑलवेज वाज लाइक वेरी गुड एट एकेडमिक्स। सो जब मेरा हुआ था, व्हेन आई वाज लाइक इन इंटर एंड गॉट इन एनईडी, Hmm. देन तभी से मेरे बहुत सारे दोस्त फास्ट में थे, तो मैंने उनसे बोला यार ये होता क्या है, तो देयर दे शो मी वन ऑफ माय फ्रेंड एसन, Hmm. who I don't know, he's in US, maybe Systems Limited or something. Hmm. Just giving shout out because, like, yeah, Yeah. he uh, he added too much in my career, so that's why. Hmm. So उसने एसन ने मुझे जावा दिखाई, भाई ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल दैट, Hmm. एंड
we have this C, not Java actually, C. Hmm. एंड उसने बताया जी लेट अस सी को है यशवंत गणितकर की, तो तुम करो इससे। एंड देन मैं घर गया यार, मैंने कहा यार दिस इज अ गुड थिंग। Hmm. एंड एंड आई थिंक वो जो चीज थी, इट जस्ट stuck with me. Like it was something that I really enjoyed. So there are things in life that you just enjoy. बिल्कुल. That is, I didn't know anything about programming what it is, so but वो हुआ। तो मैंने जो छुट्टियां थी, एज आई सेड दैट आई वाज सुपर नर्ड, तो मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले यशवंत कनितकर को खत्म कर दिया था घर पे अपने, खुद ही स्टार्ट कर करके, ओह वाओ. जस्ट टू हैव लाइक, आई वाज लाइक ओके मेरा थोड़ा सा आगे हेड होगा। स्टार्ट हो जाए. हाँ, तो दैट फर्स्ट सेमेस्टर कुछ भी नहीं था, एंड देन ऑफ कोर्स आई वाज नॉट। जब वो आया इन द सेकंड सेमेस्टर, आई ऑलरेडी हैव अ गुड एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट, लाइक आई न्यू व्हाट आर लॉजिक्स, आई न्यू व्हाट इज कोडिंग, Hmm. एंड दैट इज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर। सो वहाँ से मेरा और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देन वही यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स बनाना, देन चीज़ें चलती रहीं। आई आई यूज टू फॉलो एसन, बिकॉज वो फास्ट में था, हम एनईडी में थे, फास्ट वाले हमसे थोड़ा आगे ही रहते थे। Hmm. कि हम ये बना रहे हैं, वो मुझे बताता था यार मैं ये बना रहा हूँ, अच्छा। तो फिर वही जावा सीखी, Hmm. हुआ उससे फिर एंड्रॉइड। मैंने कहा जी अगेन, वही मेरा दोस्त वो एंड्रॉइड पे कुछ कर रहा था, मैंने कहा चल मैं भी एंड्रॉइड सीखता हूँ। हाँ. So also within, and again in university I've been doing all the projects. One thing that I always used to do is I always keeps ahead from what teachers has to tell me, like अगर मैं जब कोडिंग, जब सेकंड सेमेस्टर था, तो आई ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू दैट द सी थिंग। Hmm. सेकंड में सी प्लस प्लस पे ऊप थी, तो मैंने घर पे बैठ के वो एक सेमेस्टर पहले ऊप कर ली थी। इट्स नॉट बिकॉज लाइक, सो द थिंग इज आई वाज सो मच इंटरेस्टेड इन दिस कोडिंग एंड ऑल दैट, इट एक्साइट्स मी। सो इन माय फ्री टाइम, Hmm. when जब छुट्टियां होती थी, आई यूज टू डू सम सैम्पल प्रोजेक्ट, सो दैट हेल्प्स मी अलॉट। लाइक Hmm. I was always ahead from the class, not in kind of like I was something genius or something. I don't think so. I was like, I am super dumb, but the only thing that keeps me a little ahead is कि मैं जी छुट्टियों में कर लेता था काम वो सारा, और Hmm. उस वक्त के लिए तो, and that just increase my interest in all this thing. Hmm. Fifth semester, I've already made. I was good in Android. Hmm. I was very good in academics. Like I think हमारा database हो चुका था उस वक्त तक, हमारा ऊप हो चुका था। प्रोग्रामिंग मेरी अच्छी, तो आई वाज टू गुड इन इट, लाइक एज अ थ्योरी, बिकॉज ऑफ आपने पढ़े हुए पढ़ने वाला रट्टे मारे हुए, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। Hmm. एंड इन फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग, कि जी मिल जाए, इंटर्नशिप मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जस्ट अप्लाइंग हियर देयर। So I got lucky. I got like startup था, very small startup. It was in an apartment actually. Hmm. So मैं भी शायद स्टूडेंट ही चाहिए थे। तला भाई मतलब Hmm. जिनसे आपसे मैंने और उन्होंने सेम डे स्टार्ट किया था। He was Android, Nice. I was iOS. So from there we started our career actually same day. So Oh, nice. yeah, professional career from the same day. So from there, like I just go there. They were looking for a junior engineer or intern or whatever, Hmm. very minimal salary, but that's not what I was looking for. I was looking for some exposure. So Hmm. that's how it got started. Interview उन्होंने वही लिया जो normal DB का था, and as I said, I was good in it. So they give me that chance. I was like, and also in iOS, because that is something that I don't think, I don't know right now, but I cannot afford the Mac in my home. बिल्कुल. So Hmm. उन्होंने कहा जी iOS कर लोगे आप, मैंने कहा जी अब कुछ भी दे दे मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। You had the right attitude, I think. Yeah, because I didn't know anything about the Swift or anything, but I knew, मैंने कहा भाई अगर आप मुझे मौका देंगे तो आई नो आई कैन डू इट, एंड दैट्स हाँ, व्हाट इट इज। बिल्कुल. Because YouTube was my teacher, and that's from where I start learning iOS, Hmm. and that is what it is. That's how I got it. So the thing was, I was so much in software engineering at the time. Hmm. Like yeah, that's why, like I was also, I got another let's say job in Germany side पे कि जी वो struts 2 होता था कोई Hmm. जावा से पहले। Hmm. वो उसने किसी ने बोला कि जी आप कर लोगे, मैंने कहा जी मैं वो भी कर लूंगा।
हाँ, तो वो मैं नाइस। फ्रीलांस हॉबी कर रहा था, जबकि मुझे बैकएंड का कुछ भी नहीं पता था, तो वो जल्दी-जल्दी सीखा, छोटा-सा काम कर लिया। हाँ, I got one thing from on Xamarin again, हुँ, तो या मैं वो भी कर लूँगा। तो आई वाज़ लाइक काइंड ऑफ मैनिएक एट दैट टाइम बिकॉज़ ऑफ लाइक आई लव सॉफ्टवेयर कोडिंग एट दैट टाइम। एंड आई थिंक उस वक़्त चीज़ें थी भी नहीं, इतनी स्टूडेंट थे, बिल्कुल। तो फोकस वाज़ ऑन दैट सो Yeah. हाँ, I think at that time you put in all the effort that you. so everything was like for me it was like kind of I go crazy and just like I want to do this, I'll do this. Also I have some very गुड पीपल जिनसे मैं फॉलो भी देख करता था उनको, और हुँ, compete भी एक तरीके से होता है बंदे का कि यार वो ये कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, एंड दे वर ऑलवेज बेटर देन मी, सो आई राइट। दैट्स ऑलवेज हाँ, कीप कीप मी मोटिवेटेड कि यार वो हमेशा मुझसे एक हाथ आगे रहता है। I think it's important to surround yourself with the right people, with the right. 100 Yes, yes. Okay, so I think one thing that a lot of us are really interested in is your journey from Pakistan to Amazon. So how did that opportunity come about? How did you get selected, or how did you apply? so it was not from Pakistan to Amazon, Okay. it was from Germany to Germany actually, Hmm. it's not from Pakistan to be very honest. uh, From Pakistan, I got job in Germany, yes, Yeah. but it was in a different company, which is Zalando. Hmm. Uh, uh, at that time, I guess in 2019, again I was looking for something more Hmm. outside Pakistan. Keep applying, applied a lot. I don't know how many companies, Hmm. interviewing very much, and then I got again lucky. I Hmm. guess my manager at that time, Zalando, actually opened just a opening for me. He was like he was not hiring for junior engineer, Hmm. but he see that the guy has potential, he's motivated, so he just say, okay, I'll buy. So the thing is, yeah, luck was on my side, अम्मी अब्बू की दुआएं kind of thing. Hmm. तो वो तरह से मैं जर्मनी चला गया जॉब पे, वहाँ जाके फिर चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। आई डोंट थिंक सो कि इवन इफ यू आर इन पाकिस्तान and if you clear the interview in Amazon, they have any issues calling you there, especially Hmm. also depends on from where you are applying, because I don't think so they'll give you the visa for US or something. But if there is a company, sorry, if let's say there is a role in Germany, I know for sure Ireland, UK, Hmm. they will sponsor the visa. For Amazon, it doesn't matter Hmm. कि जी आप कहाँ पे हो. So I would say that things, in my opinion, things remain same. Hmm. What How I was approached is through LinkedIn. So that's what I would say. So once you have a certain kind of experience, Hmm. then you get approached. So when I got approached, I had around 6 7 years of experience, right? Hmm. So that's and of course आपने अपनी LinkedIn भी इतनी की हुई है कि people come, like if someone comes से कि हाँ यार इसका काम किया हुआ है, लेट्स अप्रोच. सो वहाँ पे मुझसे रिक्रूटर ने अप्रोच किया था मुझे. Hmm. And from there it all started. Hmm. uh, I was again lucky there at that time, because before that, I guess around 2 months back, or I don't know, a month back, I applied in Google. Hmm. So I was in preparing for Google. ठीक है। And गूगल का जो टेक्निकल होता है, सो आई वुड से इट्स नॉट लाइक अमेज़न और गूगल का कोई एक हल्का होता है, एक कुछ होता है. Hmm. टेक्निकल राउंड, आई थिंक गूगल फोकस अ लॉट ऑन data structures and algorithm. Okay. Amazon also does it, but Google has some different kind of focus, let's say. Hmm. Amazon का थोड़ा डिफरेंट होता है, मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ. बिल्कुल। तो मेरा ये था कि मैं डीएसए में अच्छा नहीं था, तो आई वाज अ लॉट वाज फोकसिंग प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर गूगल. तो ठीक। वो गूगल तो नहीं हुआ, तो मेरा फिर उस वजह से आई वाज वेरी मच प्रिपेयर्ड गोइंग फॉरवर्ड इनटू द इंटरव्यू, बिकॉज प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो मैंने देखी है, लोग जो फेल होते हैं, and that makes sense कि जी they are not prepared and they don't have much time. Hmm. So I would suggest before कि जी when you are approached by any recruiter, if you clear the first, let's say online, then ask for appropriate time, don't shy away from it. Normally these big company gives you ठीक। good. Hmm. So that's how it is. Like I was approached, I was already preparing. Hmm. uh, आपने I cleared the, sorry.
आपने कितना टाइम लिया? किस चीज में? ओह, या उस I took my time, around I think the whole process consists goes around more than more almost 2 months or 1.5 month easily. नाइस। I guess I took 2 or 3 weeks for the first one and then 3 weeks for the last. So हम्म we have the initial and then we have loop round, which is 4 hours interview. You can divide it in 2 3 days, but I took my time हम्म normally. But my part was I was already prepared. That is the thing. And that's what I would suggest to all the people, that if you are targeting FAANG, first start preparing for DSA. हम्म That is the हम्म, problem. You because and I DSA में हर कोई इतना कोई चैंपियन नहीं होता, हम भी नहीं थे. बिल्कुल। So that's the thing. Start preparing हम्म at least 15 days, 20 days back, and then you can apply. If you have someone known, go for referral because referrals से बहुत फर्क पड़ता है. Like if someone asks me to refer हम्म in Amazon, what I refer them, and uh, I personally also go to recruiter and say भाई मैंने इसको रेफर किया, एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए बुला लो. हम्म, एंड दैट वेरी नॉर्मल, नोबडी सेज कि जी कोई मसला है. ठीक है। तो इससे फायदा ये होता है एटलीस्ट आपको इंटरव्यू आ जाता है. हम्म Like then again in Amazon I refer a lot of people, but none make the final selection. The whole point was that they were not prepared for those kind of interviews. हम्म और and just if we since we are on Amazon, थोड़ी बड़ी बात हो रही है, but just let me हम्म, it here that बिल्कुल। if you are it is particular for Amazon, that Amazon, as I said before, that Amazon focuses on technical, which is data algorithm, हम्म, but the equal focus is on behavioral interview, ओ, and that's something that Amazon focus very very heavily. So if you have 5 interviews, you have 5 different behavioral questions, हम्म not question, interview. So हम्म if they ask, let's say, and uske liye, like I've been doing interview in Amazon for almost, I don't know, 2.5 year, हम्म, and technically लोग pass कर जाते हैं, behavioral they do not, because they think it's easy. It is not, ओके। because they ask you about different situation. हम्म Then what, as an interviewer I am looking for is that this person that tell me first how they communicate their thing, and also the complexity of the thing that they are telling me हम्म should be at the level that they are applying for. हम्म मतलब अगर सीनियर इंजीनियर है और वो मुझे बता रहा है जी मुझे एक मुश्किल सिचुएशन ये थी कि मैंने कभी किसी टेक्नोलॉजी को पढ़ा नहीं था, उसको मैंने सीखा और कर दिया, तो आई से इट्स वेरी कॉमन, इट्स हम्म, नथिंग टू कॉम्प्लेक्स, राइट? बिल्कुल। So, or and something. So what I would say, if you want to apply in Amazon, do DSA, but also well prepared for behavioral interview. हम्म And you can search how it happens. I cannot tell you here, but prepare well. हम्म I literally wrote all my stories on my on a book हम्म copy, so that and I practice it. I took one whole day just for behavioral interview, but that is, it looks very small, but at the point of इसमें जिसमें आपने सिर्फ अपनी स्टोरियां बतानी है, हम्म उसके लिए it is actually good time. So I would say do these two things, and I don't think so. And so you have a good experience, good LinkedIn. हम्म Great if you can get a referral, हम्म, and if you are well prepared. Doesn't matter आप पाकिस्तान में हो या कहाँ पे हो. ठीक। uh, y- if you will be there, if you clear the interview, Amazon make sure कि जी वो आपको बुलाएगा, simple. हम्म, So that is okay, what it that's is. nice. I think there are multiple follow-ups. So firstly, ये कि you said that you should have a good LinkedIn. What does that mean? किस तरह लगना चाहिए? क्या चीज़ होनी चाहिए आपके LinkedIn पे? अब so again I don't, मैंने कभी वो नहीं लिया किसी से, मतलब कोई टेस्ट नहीं की लिया, या कोई मैंने उसका वो नहीं किया, यूट्यूब फॉलो नहीं किया, बट जो मैं करता हूँ, I always keep my LinkedIn updated and how it is. हम्म How it's like कि जी मेरा एक्सपीरियंस हो एग्जैक्टली मेरा जो रिसेंट चल रहा है वो हो, एंड आई ऑल्सो मेक श्योर कि जो मैं काम करता जा रहा हूँ, जो मेरी सीवी में जो जिस तरह से मैंने अपना काम डिफाइन किया होता है, दैट्स ऑल्सो आई डिफाइन इन माई हम्म लिंक्डइन. ऑल्सो मेरी जो समरी है, दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट आई एम एंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर नेक्स्ट. हम्म, दैट्स व्हाट आई थिंक. okay. I don't
सी के कोई पिक्चर आप फॉर्मल लगा दो तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है या ना लगाओ तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है। It's about the आई थिंक content. yeah, it's more about like simply if I am a recruiter, what I will see, I will not be seeing your picture. Hmm. What I will see your summary and वहाँ पे आपने ऐसी क्या चीज़ लिखी है कि वो आपको और पढ़ने पे मजबूर करे कि Hmm. अच्छा इसके साथ 10 साल का एक्सपीरियंस है मोबाइल में, ओके और नीचे क्या लिखा है इसने, अच्छा ये कर रहा है Hmm. और ये चाहता है, अच्छा चलो मैं इसका एक्सपीरियंस देखता हूँ। Hmm. अच्छा एक्सपीरियंस में अब ये है जी अमेज़न में काम किया, ये किया, अच्छा एक ये चीज़ है, एक ये अमेज़न में इसने ये काम किया है। Hmm. जैसे नहीं, अगर आप लिंक्डइन पे चेक करें, मैंने लिटरली रिजल्ट्स भी हैं कि जी मैंने फ़र्ज़ करें शार्डिंग करी है, तो Hmm. उससे तो मेरे जो यूआई का टाइम है वो 100 मिनट से मैंने 40 मिनट कर दिया। Hmm. तो आई डोंट नो 60% इम्प्रूवमेंट और समथिंग। Hmm. तो इस तरह से तो सो those things matter. I don't know if every recruiter reads it on it, but that's what I did. Simple. Hmm. I don't know. Okay. No, that's very practical, good advice. अच्छा, तो Amazon में इंटरव्यू के कितने राउंड्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं? Normally, steps are, I would say, so I won't call recruiter or HR as a step Hmm. because that doesn't matter Hmm. mostly, to be honest. It's 3 rounds, I would say. Hmm. Uh, Sometimes it's two, but mostly it's three. First round is online test. ठीक है. अ, वो आपके पास आपको कोडिंग चैलेंज आता है। Hmm. उसके उसमें आपका एक नॉर्मल अमेज़न के जो लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, वही बिहेवियरल उसमें ये पूछते हैं, उसमें कोई सही गलत आंसर नहीं होता। Hmm. उसमें ये होता है कि आर यू अ हार्ड वर्कर और अ स्मार्ट वर्कर? अगेन इट्स नॉट अ क्वेश्चन Hmm. जो वो पूछेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। बिल्कुल. द बेसिस ऑफ दैट दे जज के यार हाउ मच अमेज़ोनियन यू आर ऑलरेडी, बिकॉज़ वाओ. yeah, when you hire someone in Amazon, when we are hiring someone in Amazon, we do not only hire कि जी कि ये बंदा इंटरव्यू पास कर सकता है। We make sure when we hire someone, it's like can can he or she survives Amazon and raise the bar of the team Hmm. on a बिल्कुल. season. That means कि यार जी सिर्फ आए ना, Hmm. ये यार सह सकता है ये जो भी है, क्योंकि Amazon is a tough employer. It's not simple. It's not uh, Easy. it's easy. Hmm. कि जी they expect things from you. Hmm. Uh, so yeah. So सॉरी मैं ज़ोन आउट हो जाता हूँ। तो ये है। हाँ, ठीक है. तो दिस अ, द फर्स्ट राउंड टेस्ट आ गया और उसके अंदर कुछ बिहेवियर एग्ज़ैक्टली। तो क्वेश्चंस. और एक और चीज़ होती है उसके अंदर व्हिच इज़ वेरी जनरल वर्किंग स्टाइल इंटरव्यू दैट इज़ कॉल्ड। और उसमें भी वो वेरी जेनेरिक होता है, बट फॉर अ मोबाइल इंजीनियर्स इट माइट सम टाइम हिंडर यू बिकॉज देयर दे वर टेस्टिंग योर जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्वेश्चंस। उसमें यही होता है, उसमें सिचुएशंस दी हुई हैं हुँ. कि जी आपके आपके पीएम ने आपसे कहा कि ये फीचर बनाना है तो क्या करोगे। हुँ. अब अब उसके 4-5 बातें लिखी हैं कि मैं लाइकली, मोस्ट लाइकली, लेस लाइकली, नॉट। तो उसमें वो चेक करो। तो ये 3 राउंड होते हैं आपके जो ऑनलाइन होते हैं, व्हिच कंप्राइज अराउंड 2-3 आवर्स हुँ. एंड कंप्लीटली ऑनलाइन। एंड उसके बाद आपके रिजल्ट्स ऑफ कोडिंग, आपके रिजल्ट्स ऑफ दीज टू, देन दे से जी टू यू। और उनके कुछ कट ऑफ्स होते हैं हर टीम के कि जी हुँ. वो कहते हैं अब हम अब आगे जाना है, देना है या नहीं जाने देना। तो हुँ. अगर अब उसमें भी होता है इफ यू जस्ट हिट एवरीथिंग आउट ऑफ द पार्क, सो उसमें फिर जो नेक्स्ट इंटरव्यू है समटाइम्स वो कहते हैं यार इसने इतना अच्छा किया है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है. नहीं हम डायरेक्ट इसको लूप राउंड में ले जाते हैं। वाह! मुझे ओके. लगता है कि नहीं यार चलो हम ये कर देते हैं। हुँ. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज, बट हुँ. इज द थिंग, राइट? बिल्कुल. कि मल्टीप्लेक्स. मल्टीपल, बट यू कैन से 3 ही राउंड होंगे। तो उसके बाद एक और लूप जिसे कहते हैं फोन इंटरव्यू, इट इज नेवर ऑन फोन। हुँ, हुँ. आई डोंट, दे आर कॉल्ड फोन इंटरव्यू। ठीक है. ये ऐसे ही होता है जैसे हम बात कर रहे हैं लैपटॉप पे, इट्स सिंपल। अच्छा अब जितने भी राउंड्स होंगे दे विल बी सो इस वाले में कोडिंग चैलेंज होता है आपका एक पार्ट, एंड देन द सेकंड पार्ट इज अगेन बिहेवियरल हुँ. राउंड। बिहेवियरल में वही होता है कि वी आस्क, सॉरी, ये लाइव कोडिंग होती है? लाइव कोड, हर चीज़ अब लाइव है। ओके. लाइव कोडिंग है, आपके साथ एक सामने बंदा बैठा हुआ होगा या बंदी बैठी हुई होगी, वो आपको कोडिंग का टास्क देगा।
यू हम्म, हैव टू गो इट, करना है आपने, एक्सप्लेन करना है, एंड दैट्स इट। देन वो बिहेवियरल क्वेश्चन पूछेगा आपसे हम्म, कि जी टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर टीम, हम्म, और टेल मी अबाउट अ hard problem that you solve. हम्म, So there we were judging some. So Amazons have some their leadership principles, हम्म, and every team hire for certain leadership principles that are their are core leadership principle. Every team has their core leadership principle. हम्म, तो उस पे हम जज कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं ये बोलूंगा अगेन, यू डोंट हैव टू लर्न लीडरशिप प्रिंसिपल, हम्म, जस्ट बी गिव अ वेरी गुड एग्जांपल। हम्म, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आपने किया है काम या नहीं किया, आपके दोस्त ने किया है, आपके किसी कुलीग ने किया, नो बडी केयर्स हम्म, हाउ गुड यू सेल योर सेल्फ, हम्म, ऑल अबाउट दैट। ठीक है, Simple. बिल्कुल, या, When I give interview, I portray some examples that I didn't do. हम्म, I shoot them. हम्म, I knew in and out of that thing. हम्म, I say, okay, I did this. Simple. हम्म, Not every time, but some. Because in Amazon, you have, अब आपके, अच्छा अगर आपने ये पास कर लिया, then you go in the loop interview. हम्म, There you have 4 interviews. ठीक है, You will have, no, 5, I think. So you will have a coding interview, you will have a data structures interview. So फिर से कोडिंग, yeah, it's so much coding. या, So you have data structure algorithm, you have programming, हम्म, then you have OOD design interview जिसमें आप object oriented design होता है, हम्म, and then you have your manager interview. So these are the four interviews that you have. इनमें से 3 आपके coding है, हम्म, और एक उन 3 में से एक बार रेजर होता है, हम्म, जो इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स अगेन इफ यू परफॉर्म वेल यू विल रेज द बार, सिंपल। That's something that is more internal to Amazon than to you. So again इसमें दो में वो नॉर्मल कोडिंग होती है, एक में वो आपका डिजाइन देखते हैं, हाउ यू कोड, हम्म, and so one part is this, and then all, so and in managerial interview they sometimes take system design, sometimes mostly. हम्म, So one half of each interview is what I told you, coding, OOD, and data success. The other part is behavioral. So if you check, is that we have around 5 interviews that are behavioral. हम्म, So and if everyone asks at least 2 questions, then you at least have 10 different examples हम्म, that you can portray, right? एक एग्जाम्पल को यू कैन यूज मल्टीपल, आई वोंट से मल्टीपल, बट लेट्स से 2 times, बट आई वुड नॉट recommend, बट इफ यू डोंट हैव इट, यूज इट। हम्म, आई पीपल डोंट recommend it is because that show, अगर मेरे पास एक ही एग्जाम्पल है हर चीज की, तो दैट मीन्स आई डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस, सिंपल, right? बिल्कुल, So that's why. So and that's exactly why I said that prepare your stories. हम्म, What I did, I just searched the Amazon behavioral questions, हम्म, the 10 20 list, हम्म, and I just chalk out and prepare everything for them. हम्म, कुछ स्टोरी आप एक स्टोरी 4 में चला सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम्म, बट कहने का मकसद ये, प्रिपेयर वेल फॉर द बिहेवियर इंटरव्यू, बिकॉज दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ Amazon, एंड आई I've been into so many cases where the person was so good technically, हम्म, but they clear the behavioral interview, हम्म, and we have to reject them. So या, या, आई थिंक दैट्स समथिंग जो कि लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। idea भी नहीं होता, and they are not prepared. That is the main problem. हम्म, They think they are prepared. हम्म, Like if I ask you right now, okay, Ji, tell me about the hardest problem. I हम्म, am 100% sure. Like I knew you are a top engineer and everything. हम्म, You did it, but the problem is how you will tell. हम्म, आपने जब उसको बताना है, that मैं एज एन इंटरव्यूअर, मुझे उसमें से डेटा निकालना है कि यार इसने काम किया है नहीं किया। हम्म, आप मुझे कितना डेटा पॉइंट दे रहे हो कि मैं बोलूँ नहीं यार ये बंदी मेरे साथ मेरी टीम में मेरी कुलीग बन सकती है, बिल्कुल, राइट? अगर मैंने बोला जी मैंने कैशे की लेयर लिखी है, हम्म, तो एक का मकसद है मैंने जी कैशे की लेयर लिखी है। एक मैंने कहा कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने देखा अच्छा ये मसला है, इसको सॉल्व मैं कैशे से कर सकता हूँ। कैशे की मैंने क्या किया, मैंने उसके पीछे, आपने ऐसे तो नहीं होगा सुबह उठ के आपने कैशे की लेयर लिख दी, हम्म, आपने रिसर्च की होगी, आपने सीनियर इंजीनियर से बात की होगी, हम्म, आपने कुछ पीओसी किया होगा, हम्म, आपने फिर हिट एंड रन किया होगा, फिर आपने टेस्टिंग की होगी, फिर आपने कुछ किया होगा, एंड देन यू एक्चुअली डिप्लॉय इट, राइट? बिल्कुल,
सो सेइंग कि जी मैंने कैसे लिखा और मैंने ऐसे ऐसे लिखा, हम्म दैट शोज, दैट इज टू डिफरेंट थिंग। एंड हम्म वन कि भाई एक बंदा प्रोसेस फॉलो करता है हम्म जो सिमिलर टू अमेजोन है, सो हम्म ही शी विल बी अ फिट। दूसरा जी मैंने कैसे लिखा है, तो भाई मैं उसमें क्या करूँ, स्टैक ओवरफ्लो से उठा के भी लिख सकते, राइट? बिल्कुल। सो दैट्स व्हाट इट इज। Okay, very interesting, very interesting. So actually, I was reading a post that you have on your LinkedIn as well. जिसमें you talked about some practical steps that you did कि आपने तैयारी कैसे की थी फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज। for the technical interviews. So थोड़ा सा can you tell us some tips for people कि किस तरह उनको technical interview की तैयारी करनी चाहिए? Mine was very brutal. Again, I told you, I am a nerd kind of person. Now I have a kid actually. I don't know how much fire left in me now, but 4 years back. So Google is my dream. Okay. Still, from the university, it like I used to say कि जी हाँ, बस वेट करो मैं आ रहा हूँ, इस वाला टाइप अभी तक नहीं हुआ मेरा, but it's हो of जाए। like that. When I got हुँ, an interview invite from Google, I just go berserk. ठीक है। So I took 20, 30, 20 days. हुँ, My like normally people don't do this. Like my vacations हुँ, for the interview preparation, and at that time I know कि जी मैं सिर्फ नमाज के लिए उठता था अपने बेड से, अच्छा। and that I was literally 14 hours doing lead code because I was not good at lead code. So for a month, हुँ, I do same thing for 14 hours or 16 hours each day. So that's why I'm saying you should not follow me. That is something very different. My lovely wife helps me a lot in it. She हाँ, was taking care of it. She या taking care of me for everything and everything. But that's how I do it. हाँ, And what I was doing, what I can tell you is what you can do. हुँ, Uh, that start preparing if you wanted to target FANG, हुँ, start preparing for lead code early. ठीक उस है। वक्त ना करोगे जब आपके सर पे वो इंटरव्यूज आ जाए, क्योंकि बिल्कुल, फिर नहीं बिल्कुल, होता। बिल्कुल। स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली। हुँ, हाउ आई डिड, मैंने जी थोड़ा सर्च किया जी कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। हुँ, पहले मैंने उनके अराउंड अपने आप को पक्का किया हुँ, कि जी हर तरीके के क्वेश्चंस की जिस्ट आती हो, हुँ, कि जी ट्री का क्वेश्चन है वो इनके सबके पैटर्न्स होते हैं। इट्स नॉट समथिंग, दैट्स व्हाई आई पर्सनली डोंट लाइक दीज थिंग्स, बट इट इज व्हाट इट इज। हुँ, कुछ पैटर्न्स होते हैं, उन्हीं पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। इट्स लिटरली रट्टा। अगर आपका रट्टा अच्छा लगा हुआ है, आपने हुँ, पैटर्न देख के पहचान लेना, अपने काम कर देना, इतना कोई हुँ, रॉकेट साइंस नहीं है। हुँ, हुँ, So I did, I just go through every single pattern first. It was around 100 and something questions, हुँ, which I did. Second thing is, I was interviewing, doing mock interview every day. So that what I did for a month. I how every day. There was a site. I don't know if it is still there. I don't know. So brand at that like Pram, it is called Pram something. हुँ, So what they used to do is that I have to take someone's interview and then they do it. So it was a mock interview. हुँ, So that's what I did for a month, हुँ, every day, every single day that I did. हुँ, Uh, wake up जी, आज ये करना है, करना है, करना है, करना है। 5 बजे मेरा इंटरव्यू फिक्स होता था। हाँ, मैंने वो किया। सो what it helps me, especially doing interview बार it takes out that nervousness from me. हुँ, बिकॉज इंटरव्यू कोडिंग करते हुए भी यू हैव थिंग्स कि जी एक होता है कोड करना, एक होता है इंटरव्यूअर को बता। देखो मैं जब इंटरव्यू ले रहा होता हूँ ना किसी का, तो मैं उससे ये नहीं देखता। अब अगर मैंने आपको अब खैर मैं क्या क्वेश्चन पूछता हूँ ये तो मैं नहीं बताऊंगा बैठ के, बट इट इज नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर किसी ने जरा सी भी कोडिंग की प्रैक्टिस करके आया है अमेजोन की, तो हुँ, आई हाईली डाउट के यार उसे नहीं आता होगा। अगर नहीं आता तो फिर वो शदीद माठा है कोई। नहीं आता, बहुत सिंपल सा मैं क्वेश्चन देता हूँ हाँ, जो भी है जो होते तो। हुँ, बट व्हाट आई वाज लुकिंग इसके भाई, जब मैंने उसको क्वेश्चन दिया, हुँ, उसके अंदर मैंने कुछ चीजें छुपाई हुई हैं। क्या यार उसने मुझसे पूछी या नहीं पूछी, हुँ, डजेंट मैटर, उसको पता था पहले से इसको क्या करना है। हुँ, तुमने पूछना है, क्योंकि दिस इज व्हाट आई दैट दिस शोज मी कि अगर कल को मैं इसको फीचर देता हूँ कोई बनाने को, बिकॉज अमेजोन में एम्बिग्यूटी बहुत है। हुँ, यहाँ पे 100 टीम्स हैं, आपका सॉफ्टवेयर 14 साल पुराना लिखा हुआ है, जिन्होंने लिखा था वो जा चुके हैं। आप हुँ,
है और बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, आई डोंट नो 100 के लाइंस ऑफ कोड है और इतनी बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं, आपके Hmm. एम्बिग्यूटी बहुत है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे, जब तक आप रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं करोगे, हाउ वुड यू राइट अ फीचर? Hmm. अगर आपने कल फालतू फीचर लिख दिया, कुछ भंड मार दिया, तो यहाँ पे तो मिलियंस में नुकसान करा दोगे आप। तो जब मैं I see. कोडिंग का क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो यू मस्ट आस्क मी सम क्वेश्चंस, यू मस्ट क्लियर एवरीथिंग फर्स्ट, एंड देन यू टेल मी कि यार मैं एल्गोरिथम मेरा ये है, एंड देन यू मूव टू कोड। Hmm. सो what these so I learn these things through mock interviews and some, so that's how I prepare myself for Google. I was able to go to the last rounds, but then I couldn't make it. But what it's like, वो कि जी मैंने गूगल के लिए इतनी अच्छी तैयारी करी थी कि the then interviews were very easy for me. Hmm. Baaki, especially the technical part. The only thing for me was behavioral Hmm. to be prepared for, and that's what Hmm. I prepare for that as well. The good part is everything is on internet. Hmm. Every for FAANG, everything is on internet. Hmm. Indeed, people literally have YouTube channel dedicated to this. बिल्कुल. You can have everything there. It's just how much you are willing to Hmm. put time. That's why I said don't. You cannot follow my example because I did something which nobody does normally. Hmm. But what you can do is take the essence and then put it कि अजी अभी से मैं स्टार्ट कर लूँ ये करना। Hmm. अगर मैं 14 घंटा लगाया था तो भाई आप 2 घंटे लगा लो, Hmm. आप घंटा लगा लो, रोज का आप एक क्वेश्चन कर लो। Hmm. इट विल टेक यू, मुझे अगर महीना लगा, you might take 3 months, I think. Hmm. But I don't, so if you are doing lead code for 3 months, I don't think so you are not then good enough for at least Amazon. Hmm. Technical is not that hard, it's doable. Hmm. Hmm. Okay. Okay, that's interesting. That's very interesting. So, how are the steps different for Google? Because you did go through that interview process. Google was more technical, so at that time, so they were not, so there was only one behavioral interview Hmm. in, and all coding, everything was coding, ठीक है. nothing else. And in coding interview, or also one was system design and one was kind of, yeah, again, it was also coding, yes. Khair. So, what Google does is they expect you to solve, I think, two questions in 1 hour. That is the problem. Hmm. And Hmm. questions are not easy. So it's not like two different questions. They always ask follow-ups, Hmm. but those follow-ups are pretty hard. Hmm. So one of the person who gave me some string question, Hmm. and and then Google also make it hard, which I don't agree why they do this. I don't know. That doesn't make any sense. They ask you to do the code on Google Docs, but then they expect कि जी आप कोड का सिंटेक्स भी सही हो, मतलब Oh, कंपाइलेबल कोड हो। तो अच्छा. although Hmm. which doesn't make Logically any sense makes in my sense. opinion, I Hmm. but khair, Hmm. it is what it is. You cannot do anything. Hmm. So I think they are looking for very sharp minds and all that. I don't know. Hmm. So that is what it is. So Google में it's more technical. That's why I say कि Google is very technical. Like आपने लीड कोड, Amazon में मैंने लीड कोड के हार्ड नहीं किए थे क्वेश्चंस, स्पेशली वो हार्ड तो बिल्कुल नहीं किए थे जिसको समझने में ही मुझे 20 मिनट लग रहा है, क्योंकि Amazon का जो टेक्निकल पार्ट होता है वो होता ही 30 मिनट का। Hmm. तो इंटरव्यूअर आपको 20 मिनट जो क्वेश्चन पढ़ने में लगे क्यों देगा, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। Hmm. गूगल में you can expect things like I was asked to write tries. I don't know if you know about try data structure or not, but Hmm. no, but normally it's not as it was like write autocomplete search. Hmm. तो Oh, उसमें wow. data structure try लगता है तो वो use होता है। Again, it's not hard, Hmm. but it will take some time बिल्कुल. to write, and then उस पे वो question करना and all that. Hmm. Again, I was got one question, I guess, regarding string. It was hard. Then the follow-up question was actually related to dynamic programming, which is like the toughest topic in all this. Hmm. So that's how they grill you. Hmm. So that's what I say, that Google is more Hmm. technically challenging. Amazon is more well-rounded. Hmm.
बिल्कुल। It's yes, technically challenging, but it's also you have to be very good at communication and other skills. Okay, that's very interesting. So now AI is on the rise, right? So आपके ख्याल में will that affect the recruitment processes in big companies? I'm not seeing anything changing, to be very honest, in Amazon. ठीक है। Uh, doesn't make any sense with agentic AI. Why do you need to have this kind of interview? बिल्कुल। Uh, If it does, I don't know. In the future, I can say हम्म what I think it should do is create more well-rounded software engineer, हम्म or the expectation from the software engineers would be to to work on any technology rather than being an iOS engineer or being an Android engineer. That's what I am seeing. Already seeing startups having posts like product engineer. हम्म It's another name of saying जी ये काम करना है हम्म और करना है। बिल्कुल। अब इसमें अगर तुम्हें ऐप बनानी है तो ऐप भी बनानी है तुमने, और अगर बैकएंड पे तुम्हें एपीआई भी लिखनी है तो सर्विस भी लिखनी है तो जी वो भी लिखनी है। हम्म बिकॉज तुम्हारे पास एक एजेंट है, तुम्हें कोड थोड़ी, एंड दैट लिटरली मेक्स थिंग्स सो इजी, हम्म राइट। पहले अगर मुझे आप बैकएंड का कोड दे दो और मुझे जो नहीं पता उसका, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हम्म बट नाउ आई डोंट नीड टू नो एवरीथिंग। हम्म if the project is very well developed and it is actually developed, it is architected in such a way that उसके अंदर उसके अंदर वैसी एजेंटिक एआई जो इनहेरिटेड है, हम्म देन आई नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल। Then you have senior engineers to review your CR that are so what will happen is that you had to review your CR from the core competence. Let's say I am a mobile engineer, हम्म someone come from the backend, write a feature in Android or iOS, उसने अपनी CR रेज करी, I will be there and say जी सही है, इसने सही किया है, गलत किया है, and that's it. बिल्कुल। Why? And सेम फॉर मी, मैं जाके बैकएंड पे चेंज करूं, मेरा कोड कोई भी सीनियर इंजीनियर जो बैकएंड का एक्सपर्ट है वो चेक कर ले, बिल्कुल। खत्म बात। तो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग more roles would be, हम्म rather than an iOS or Android engineer. I हम्म don't know if especially FAANG or big company change their uh, processes. views. Yeah, that I don't know. ओके। तो आपकी डे टू डे लाइफ किस तरह चेंज हुई है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग विद द राइज ऑफ एआई? पहले मैं खुद लिखता था, अब एजेंट लिखता है, और तो कुछ नहीं है इतना खास, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स एक्सपेक्टेशंस उसके हिसाब से चेंज हुई हैं? दैट सॉरी, एक्सपेक्टेशन यस 100%। टाइम चेंज हो गया है, हुँ, कितना काम रिड्यूस हो गया वो चेंज हो गया है। हुँ, अ, ये सब चीज़ें हैं। एक्सपेक्टेशंस अभी स्टिल इट डिपेंड्स इन अमेज़न टीम टू टीम, हुँ, मैनी थिंग्स, एक्सपेक्टेशंस आल्सो इन टीम टू टीम, but yes, it actually reduces things if you use it right. हुँ, So that's what it is. As I said that now mostly I am reviewing the code that agent write, हुँ, but then I'm writing it. हुँ, That is the biggest difference. I focus most on planning, which I was doing before, because in Amazon it's something that you cannot miss. हुँ, Like we do a lot of documentation before writing the हुँ, feature. Like I remember I have a feature that I coded in 2 days, but मुझे उसकी पीछे जो डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ी थी वो हफ्तों लगे थे मुझे। अच्छा। जस्ट कि जी मैं ऐसे करूँगा, इसके ये प्रोज़ हैं, ये इसके कॉन्स हैं, सीनियर इंजीनियर रिव्यू करेंगे, कहेंगे जी नहीं ये वाली लाइन में मुझे ये मसला लग रहा है। हाँ, तुम जाओ, जाके जाओ, एंड देन इट इज़ गेट अप्रूव्ड फ्रॉम हाँ। सीनियर इंजीनियर, देन टीम को दिखाओ, टीम कहती है जी अच्छा ये है, एंड देन इट अप्रूव फ्रॉम टीम, एंड देन यू कोड इन 2 डेज़। तो डू यू एंड थिंक दिस इज़ अ गुड अप्रोच या फिर ओवरकिल है? no, I don't think so. I think it's a good approach, especially when you are at the scale of Amazon, हुँ, because it looks 2 days में मैंने कर तो दिया, लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ लिख दी है जिससे कल को मेरी मेन सर्विस बैठ जाएगी, कोई मेमोरी हुँ, का मसला आ जाएगा, मेरी ऐप में कोई ऐसा बग आ जाएगा जो उसको खुलते ही बंद कर रहा है, हुँ, what I'll do, the amount of so the Amazon is Amazon because customer trust us. It's not we are doing something out of ordinary. हुँ, AWS, there is AWS, this is Azure, there is Google Cloud, then we have
लाइक अमेजोन मार्केट प्लेस, तो लेकिन उसके साथ आपके पास टीमो भी है, आपके पास आई डोंट नो Alibaba भी है, Hmm. but Amazon, Hmm. because customer trust us, right? Hmm. We are delivering value for the customer that no other are delivering, or we are doing at best, let's say, Yeah. right? And that comes through the technology. Hmm. So that's what it is. Hmm. If I did something very fast and it doesn't deliver, Hmm. and it brings something for the bad for the customer, then it takes like this to breaks the customer trust. And when you have like 100 other option, why customer stays with us? One thing that I want to put it here, which I see in engineers, especially from Pakistan, that they do not focus on the customer or the product. Hmm. Engineers are all Bob C. Martin. They wanted to do the best code possible, Hmm. and they will talk about all day what is the best architecture, what is the best data Hmm. structure, design pattern. But these all things doesn't matter if in the end you doesn't deliver for the customer. Hmm. If you're not solving the right problem या उनकी जिंदगी आसान नहीं कर रहे तो. You can write the best code in the world, Hmm. but it is not solving anything. It is not usable in the terms of customer's perspective. It's just another GitHub project. Simple, Yeah. right? Yes. So that's what it is. Like so in Amazon we have this very strong dog culture. Hmm. Like I know I propose one thing and nobody listens to me, and they say go write a document and show that to us and then we'll talk. Yeah. So that's Yeah, and it's interesting that people actually read those documents as well. यहाँ पर अगर कोई document लिखता भी है, so I think that because the culture isn't there that you actually go through it and you actually read yeah, it. we so it's not so why they read it, because we make it an integral part of our culture. And होता ऐसा है कि जी आपका हर डॉग का रिव्यू होता है विद अ वेरी फिक्स टाइम, जिसमें पूरी टीम बैठती है, उसी वक्त रिव्यू करती है, उसी में कमेंट करती है। ऐसा नहीं है कि जी मैं कर लूंगा तुम कर लेना। Hmm. तो दैट्स व्हाई। Oh, that's वरना अगर actually आप nice. Hmm. या बिकॉज़ अगर आप एसिंग करोगे तो फिर कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। व्हेन यू Hmm. स्लॉट द टाइम कि भाई ये टाइम है, Hmm. सब आ जाना इसमें, Hmm. देन दे हैव टू कम। Hmm. Okay, I think that's a very nice approach. Yeah, yeah. Okay. Another thing is that हर कोई पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, right? They're always thinking of opportunities to go to any place abroad, right? So is the grass greener on the other side? Like, is life abroad actually as glamorous as it seems from within Pakistan? Depends. ठीक है. Uh, depends. Hmm. What is the definition of glamour for you, to be honest? Hmm. If you're looking for a good money, then definitely. Hmm. At least in Germany, I can say, Hmm. and also Ireland, and also in UK Hmm. and other countries that I know, that what you are paid for. So our engineers are not some like ठुल्लू type. they बेचारे बहुत काम करते हैं पाकिस्तानी, but hard working. At least hard work में हम लोग, हमें यहाँ पे वो ओवर टाइम कराते हैं, KFC खिला देते हैं डिनर में। Hmm. तो ये करा के बेचारों से ओवर टाइम करा रहे होते हैं यहाँ पे कंपनी है। Yeah. तो और मतलब कहने का मकसद ये है कि जी यूएस में हसल का कल्चर है, बट देन यू कैन बिकम मिलियनर देयर। Hmm. यू वर्क योर एवरीथिंग, Hmm. and then but you'll get money for it. You'll paid very well. You have salaries like 300K, 400K a year, Hmm. right? In Pakistan they don't pay you, Hmm. and they expect those kind of hustle. So that is something, that's why actually people are going outside. Hmm. अगर मुझे अपने मुल्क में अच्छी सैलरी मिल जाए, Hmm. तो व्हाई वुड आई वांटेड टू लीव? सिंपल इज दैट। Hmm. मैं लेकिन यहाँ आके अपने चैलेंजेस फिर अलग होते हैं Hmm. कि अ, अगर आपकी फैमिली है, देन लाइक मेरे केस में अगर मेरा भी बेबी हुआ तो मेरे साथ मैं और मेरी वाइफ थी। Hmm. हैव टू लाइक लाइक आई जस्ट टोल्ड यू दैट मैं हफ्ते को करूंगा, फिर आई विल जस्ट गो ऑफ बिकॉज आई वाज सो बिजी इन आई डिडंट इवन नो, आई Hmm. डिडंट इवन रिमेंबर कि जी मैंने आपको कुछ ऐसा कहा था। Hmm. जब भी कुछ दिन पहले याद है, अच्छा मैंने तो ये भी कहा था उन्हें। Hmm. तो दीज आर थिंग्स, देन लाइक द थिंग इज हियर, सब कुछ फिर आप पे आ जाता है। Hmm. You earn good money. Again, life to me, I think my life is very good. I won't complain or anything. Yeah.
लाइक इफ यू से, अगर आप मुझे आज बोलो कि जी इतने ही पैसे ले लो, पाकिस्तान में रहोगे, आई वुड से नो, सिंपल. अच्छा। हम्म। फॉर मी इट इज, हम्म। बट because I have some different views to see things, and those are the things that I'm getting here, and I don't think so I will get in Pakistan. हम्म। Simple. So it depends what is the definition of glamour for you. हम्म। Right? If is it only money? Is it the quality of life? हम्म। So how much you wanna put actual effort हम्म। to have a good life? So that these are all the things, but it's not easy. हम्म। That's I can say for sure. Also, it's not like जी आप वहाँ पैसे छाप रहे हो जो पाकिस्तान में समझते हैं भैया बाहर चला गया है, हम्म। ऐसा नहीं होता. लेकिन yes, you'll get good money. That हम्म। that is something that I won't say कि ऐसा नहीं है. हम्म। Like yes, it's not easy. It's hard. Hmm. I think the another thing is that वहाँ पे there's a lot of hands-on work as well. Like you don't have help जिस तरह यहाँ पर होती है. आपने सारा कुछ खुद करना है. 100%. Yeah, you have to do so many things yourself. In Pakistan, everyone has car, bike, and everything. Here, you cannot you have to have a very uh, long process of getting a driving license, and then having a car, and then usko afford karna, and then people mostly chooses public transport. अगर आप public transport से जा रहे हो तो 30-40 मिनट जाने आने में लग गए. Hmm. सैटरडे वाले दिन आपको घर के काम करने हैं, तो all these things takes time. बिल्कुल different considerations. Another thing that comes to mind is in big tech companies like Amazon, how is the work-life balance? It's totally depends on team to team. Okay. So you can especially, so I can just tell you one thing. Hmm. जितनी बड़ी कंपनी होती जाएगी ना, Hmm. उसमें चीजें बहुत ज्यादा ऑन द टीम आ जाती हैं. ठीक है. Things literally drastically changes from one team to another. Hmm. Literally, Hmm. it's like you are working in a hell in one country, sorry, in one team, and then suddenly you change the team and life is all good. Hmm. ठीक. It's like in AWS. AWS has a cutthroat culture Okay. because they have those kind of problems. Hmm. They cannot, like uh, one of my colleague come from AWS to our team, and he told me that I was earning well, but then I was paying all this to my uh, psychiatrist because I was depressed. I was so stressed there, Yeah. right? So it depends on team to team. Some teams have a very Hmm. also depend on कितनी आपकी सर्विस कितनी क्रिटिकल है. अब कुछ सर AWS की इसलिए मैंने बात करी कि दे हैव दिस P0 काइंड ऑफ थिंग, इट शुड नेवर गो डाउन, एंड इट हैव अ वेरी गुड सिक्योरिटी. सो Hmm. नेवर गो डाउन का मतलब ये है कि अगर कल सुबह उठ के, अब ऑन कॉल जैसे है, Hmm. ऑन कॉल जिसका काम है 24 घंटे ऑन कॉल है, सिंपल. Hmm. अब अगर रात में, अब यूएस में कोई वीपी उठता है, उसको कोई डैशबोर्ड दिखा Hmm. और उसको लगा कि यार ये तो मुझे लग रहा है मसला है, वो वहाँ पे वो ऑन कॉल को दबा देगा. Hmm. अब वो मसला है नहीं आपने उठने, और समटाइम्स मसला होता भी. अब AWS का स्केल है, Hmm. आई डोंट, लाइक यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ स्केल Hmm. AWS हैज, राइट? तो अब उन टीम्स पे फिर उसी तरीके का प्रेशर भी आता है. Hmm. बट टीम ऐसी है जहाँ पर बहुत, मेरी टीम में work life balance was very good. Hmm. It was 40 hours of work. That is what Amazon, I think, will make you do. That it is not like some in कोई जर्मनी में स्पेशली, इट्स नॉट, जर्मनी में बहुत चिल कल्चर है Hmm. चीज़ों का. तो नॉर्मली इट्स समटाइम्स इट्स 30 hours of work. Hmm. You paid for 40, but 30, but Amazon make sure कि जी 40 घंटे वो आपसे ले. ठीक. That's what I would say. But so for me, I was super busy during my office hours. Hmm. But after after 8 hours, I've never opened the laptop. Hmm. What That's it is. also nice. Yeah. 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 Okay, that's very nice. I think okay, कोई skill जो आपके ख्याल में ज़रूरी होना चाहिए in order to survive and thrive in big companies. I think it would be skill. एक तो फिर नहीं, मेरा Mm-hmm. मेरा मानना ये, इट्स मोर ऑफ अ एटीट्यूड, like the human, I think the best thing that human have is the ability to learn things. Simple as that. बिल्कुल. We are so much adaptable.
Hmm. Humans are very much adaptable. That's what makes us last this long Hmm. and do some very wonderful things, Hmm. right? And that is, I think, just go close to what Hmm. your nature is. You are adaptable. Hmm. Don't be like यार ये मैं नहीं कर सकता, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, अरे ये तो ये है. Hmm. Open to open to learning, open to be adaptable. Things would be very easy for you. Hmm. If you are not, then it would be hard. Hmm. And of course, one thing I would say, open for criticism. If Hmm. someone gives you feedback, it is a feedback. It can be right or wrong, but just take it. Yeah. Yeah. Taking a step back, आपने बिल्कुल शुरू में एक बात की थी that the first job that you got in Germany, um, you applied to multiple places and then you got an opportunity there. So यहाँ पे इतना आसान नहीं होता, जब मैंने एक्सपीरियंस में देखा है कि आप काफ़ी सारी इंटरनेशनल कंपनीज में अप्लाई करते हो बट यू रेयरली गेट अ कॉल बैक, राइट? Hmm. So, what do you think can be something that makes you stand out? That you actually get that call back, you get into that interview process. Again, that would be very hard to answer, especially in my position right Hmm. now, because things change so much. That's Uh, hmm. because जब मैंने किया था तो वो 6 साल पहले बात की थी. Hmm. And and you are right actually कि 3 साल का मुझे एक्सपीरियंस था, 3.5 का. Hmm. And getting a call from outside and then getting a job, but I don't know, it क्या शायद उस वक्त मार्केट में, आई डोंट नो, मार्केट अच्छी थी या ज़्यादा इंजीनियर्स बाहर अप्लाई नहीं करते थे पाकिस्तानी, Hmm. या ज़्यादा ज़्यादा सॉर्ट लोकेशन थी नहीं, लोगों को पता नहीं था. Hmm. ये बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. Hmm. अगेन एज आई सेड, आई माय मोस्ट जर्नी, एज आई टोल्ड यू, आई वाज सुपर लकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Hmm. इट्स नॉट समथिंग that comes from uh, I work hard, yes, but I am also very lucky. Hmm. अम्मी अब्बू की दुआएं, मेरी Hmm. मेरी बीवी की दुआएं शायद, बट आई एम लकी कि जी मुझे, मैंने अप्लाई किया ये. बट आई द थिंग इज, आई वाज वेरी परसिस्टेंट. लाइक Hmm. आई अप्लाइड 500 I guess more companies, and I just got 10 or 9 interviews. So Hmm. maybe you have to be persistent. Hmm. And what I used to do, I keep changing the things. Hmm. I always ask recruiter when they reject me that what was the reason. Some people say, some people doesn't reply. Some actually told me very good thing. Hmm. Like in my resume, it was it was a remote company, and they told me that जी आपने अपना जो वो मोटिवेशन होता है, क्या कहलाता है, बड़ा अच्छा सा वर्ड होता है वो, उसका एक तो रेज्यूमे होती है, कवर लेटर. Hmm. कवर लेटर में आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, तो वाई, सो हमने इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया कि हमें बहुत परफेक्ट इंग्लिश वाला चाहिए, जबकि Ah. एंड इट वाज अ मिस्टेक, राइट? Hmm. तो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू. आई कीप अप्लाइंग, कीप चेंजिंग. Hmm. आई कैन नॉट से अभी का क्या है, क्योंकि अभी देयर आर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस दैट आर वेरी बैड राइट नाउ, True. especially for Europe, right? You don't know what happens next. So normally, and then with layoffs and with this agentic AI, and then now this market, no people knows about Germany now. Hmm. कि जी यहाँ कंपनियां बुलाती हैं way easier than anywhere. Like in Germany, it was so easy to come. Still, it's so easy to come. Like in 3 months, you'll be in Germany if you got the contract, right? Hmm. Things are very very fast tracked here, Hmm. and they need people, Hmm. a lot more people. So अब के बारे में मैं नहीं कह सकता, मेरे लिए चीज़ें आसान है क्योंकि आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई एम इन जर्मनी. Hmm. आई डोंट नो, बट आई स्टिल वुड से कि यार, आई थिंक you should have some good experience, your CVs are there, Hmm. and then you'll get very few chances. Hmm. Make sure that you avail them. Hmm. That is important. Like people say कि यार मुझे जानने वाला है मेरे भाई, मतलब जानने वाले के जानने वाले हैं कि जी मेरे 5 इंटरव्यू तो हुए सिर्फ. भाई 5 इंटरव्यू होना इज नॉट समथिंग नॉर्मल. इफ यू फेल 5 इंटरव्यूज, दैट मीन्स यू हैव सम Hmm. प्रॉब्लम. So be prepared very well, Hmm. very well. Every single opportunity you should take it like a last opportunity in today's current market. Hmm. I think that's solid advice. Yeah. So I want to move over to a rapid fire. I'm going to ask you some questions related to that. So, lead code or real world projects? Real world projects. One strong skill or being well rounded?
Depends on at what stage are you. Hmm. If you are early in your stage, strong skill, because that would be your forte. Hmm. If you are at my stage, you must be well rounded. Hmm. Passion or discipline? What sustains a career longer? Hmm. Discipline. Yeah. AI, opportunity or threat? Big opportunity. Guidance or trial and error? Better teacher. For me, trial and error. Hmm. Speed or patience? What matters more early in your career? Patience. Hmm. Confidence or competence? Which comes first? I don't know. Best if you have both, Hmm. to be honest. Yeah. But I think confidence, because in interviews, it's just you are selling yourself. Hmm. Literally, you you are selling yourself. Hmm. I did so many interviews, and it's one thing I know, that it doesn't matter how good you are a software engineer is. Hmm. You just need to look good. Hmm. It's a brutal reality, but it is what it is. Hmm. Confidence. Okay. Big tech companies or startups? Depend again on what You stage are. of your. But I would go for big tech. Hmm. Remote or on-site? Remote, of course. Why on? Pakistan or Germany? Depend in what scenario you are asking. Like Living. living Germany, like 100 times better. Okay. Some one-liners as well. One decision that shaped your career most. Watching Naruto. That is the biggest motivation waiter for me. That changed literally everything for me. Oh, wow. Too I good. wasn't expecting that. Yeah, yeah. One habit that accelerates career growth. One habit: hard work. Hmm. Keep working hard. Yeah. Especially when you are at the student level, students do not work hard. They just say they think they work hard. They do not. Yeah. Okay. Most underrated skill. Again, working hard. Working hard. Okay. One mistake to avoid early in career. Don't be very, इसे क्या कहते हैं कि बी फ्लेक्सिबल. Hmm. डोंट पहले से ही ना सोच लो कि मुझे ये बनना है और मुझे ये बनना है. Hmm. और बड़ा अच्छा सा वर्ड है इंग्लिश का. मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, बट खैर. Hmm. वो ना हो जो अकड़ू जिसे कहते हैं कि जी मुझे तो यही करना हाँ. है. ओपन टू अपॉर्चुनिटीज, ओपन टू फीडबैक्स, ओपन टू अपॉर्चुनिटी. डोंट बी रिजिड. Hmm. Yeah. Yeah. Nice. Biggest career myth. करियर मिथ. Hmm. बिकॉज करियर मिथ. For student, it is not. I think for a student, it does matter. But once you have experience, GPA, your NED, your Hmm. fast doesn't matter. But not for a student. For a student, it does, especially your CGPA. It does matter, Hmm. in my opinion. Okay. Biggest red flag in fresh graduates. Rigid. Hmm. They don't want it to learn. Hmm. They don't want it to take the feedback. Hmm. Biggest green flag. Open to learning. Hmm. Motivated, open to learning. Best thing. Like मैं बंदे को ट्रेन कर दूंगा. Hmm. I don't care, no worries. If they wanted to learn, Hmm. if they think they already know, then yeah, then don't come. Yeah. One thing AI can't replace in young professionals. uh, AI cannot replace in any. I think in human, I think adaptability. AI cannot replace it. Like Hmm. there will be new things always. AI is a new thing now, Hmm. but again, humans adapt. Hmm. They cannot change it. Hmm. Like कोडिंग बहुत चेंज हो गई. Hmm. टेक्नोलॉजी चेंज होती गई. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अभी भी वही हैं. Hmm. It's been going on for 100 years, and I am sure it will goes on for 100 years next. Hmm. Adaptability, I don't think so. Yeah.
Okay, just two more questions before we head off. One, you mentioned a bit that you think CGPA is important for students. Why is that? Why is not? मैं रिक्रूटर हूँ, मैं सामने बैठा हूँ, आप स्टूडेंट हो लेट्स से, Hmm. राइट? और खैर मैं तला भाई का नाम नहीं लेना, चल छोड़ो छोड़ो, मैं तला भाई को गंदा बच्चा बना देता। लेकिन लेट्स से हमारे पास दो लोग हैं, हाँ. एक आप हैं जो आपकी जी सीवी पे 4 CGPA, लेट्स से आपने सब कुछ किया हुआ है, एक मैं हूँ Hmm. जिसकी CGPA 2 है और किसी की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई नहीं है, राइट? Hmm. दो सीवीज मेरे सामने पड़ी हैं, मैं किसको बुलाऊंगा? 4 GPA वाले को. एंड वाई? बिकॉज आई नो उस बंदी ने हार्ड वर्क किया है तो 4 GPA आई है। Hmm. वन थिंग आई एम 100% सर्टेन अबाउट दैट पर्सन इज दैट वो हार्ड वर्किंग है, Hmm. उसने चीजों को सीरियस लिया है, Hmm. दूसरे ने नहीं लिया। Hmm. ऑफ कोर्स अगेन इफ समवन हैज अ 2 CGPA बट उसकी प्रोफाइल बहुत तगड़ी है, उसने कुछ 100 प्रोजेक्ट किए हुए हैं, काम किए हुए, देन दैट 2 CGPA मेक्स फॉर कि जी उसने काम भी तो इतना किया है। Hmm. तो बैलेंस, बट जी आपने किया कुछ है नहीं, ठुल्लू हो आप। Hmm. CGPA आपने अपने वो बनाया में प्रोजेक्ट, Hmm. पता नहीं कौन सा पार्किंग सिस्टम लिखा हुआ है अपने जावा में, तो Hmm. भाई मुझे क्या करना है? Hmm. उसको क्यों ना बुलाऊं जिस बंदी ने या बंदे ने Hmm. 4 साल मेहनत करी है, Hmm. राइट? बिल्कुल. Because CGPA shows many things actually. It shows you are hardworking, you are committed, you takes things seriously. And Hmm. in a young person, Hmm. that's exactly what I'm looking for, bhai. Hmm. बिल्कुल. Right? So बिल्कुल. that's why this is a complete myth. Hmm. हाँ, if you are very good at your coding, Hmm. I was a very top student. जब तक मेरी जॉब नहीं हुई थी, I was like around 3.8 and all that. Hmm. के बाद जब मेरी जॉब हुई, my CGPA suddenly drops to 3.5, Hmm. right? Again 3.5 is good, but for a student 3.4 sometimes, right? Yeah. तो लेकिन then what I was doing, I was learning something which is professional, right? बिल्कुल. बिल्कुल. तो कहने का मकसद ये है कि either balance it with your project, also don't do it too, like I have people, I see people जिनकी 2 GPA होती है 4 में से, भाई Hmm. 3 maintain करो कम से कम, and then back it up with some projects, Yeah. right? So for every student, Hmm. CGPA does matter. Hmm. I am looking at my perspective. Why wouldn't I call a person जिसका मुझे पता है उस बंदे ने इतनी मेहनत करी है 4 साल, और I think Yeah. Okay, very interesting. Lastly, I just want to give the mic to you. Okay, if you want to give some advice to young people out there, or even young professionals who are looking to excel in their career, what would that be? I, so my life, like what I can tell you, what I did, I am not a very bright engineer. Hmm. There are so many good engineers in my team. I do just enough to stay in a company, to be very honest. So what I do is, अगर मेरा सीनियर की रोल है, तो I will be doing enough to maintain that level. Simple. Especially now in my life, right? I am, people may think I am something, but I was not a genius person, nothing. There are people way more genius, people remember and all that. I have a very weak memory. One thing that I have that stands out is the number of hours that I put in when I need something. Hmm. It's very simple for me. Hmm. And that's what I get from Naruto, simply. Hmm. That if I want something, I would do anything for that. Hmm. Either, so it was for me, either I'll die or get it. It was literally like, yeah, yeah, this is my attitude. Simple. Yeah. So that's what I tell people, that if you want something, Hmm. just just go crazy. Hmm. हर किसी का क्रेजी डिफरेंट होता है। Hmm. अगर मेरे पास टाइम था, मैंने शायद 4 घंटे किसी चीज में दिए, आपके पास टाइम नहीं है, आप 2 घंटे दो, बट पुट सिंसियर एफर्ट इन द थिंग्स दैट यू नीड। Hmm. एंड सिंसियर एफर्ट जब आप देते हो, आपको खुद पता होता है आपने मेहनत की हुई है। Hmm. इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर पुटिंग, Hmm. इट्स अबाउट, देयर आर पर्सन्स जो बेचारे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, दे डोंट हैव मच टाइम, Hmm. राइट? एंड उनको शायद 1 घंटा ही मिले अपार्ट के जी अपनी किसी चीज पे काम करने का, Hmm. बट
अगर किसी ने 8-9 घंटे की एक ड्यूटी की हुई है, उसके बाद वो 1 घंटा उसके बाद भी वो काम कर रहा है और वो जब थक के सो रहा है और Mhm. अगले दिन वो ये कर रहा है, दैट मीन्स, सो आई वुड से just work hard. It is so underrated. It's Mm. so underrated. Yeah. There is nothing like genius or something. बिल्कुल. Everyone genius, everyone is lucky जो हार्ड वर्क करता है, दैट्स इट. Mm. ऑल्सो फॉर यंग पीपल, डोंट बी रिजिड. Mm. जो सामने वाला बोल रहा है, अगर उसके बाल सफेद हैं, उसे पता है वो कुछ बोल रहा Mm. है. पाकिस्तान बहुत ज्यादा मीमर्स हैं एंड ऑल दैट, गुड, अच्छी बात है, लेकिन लिसन टू व्हाट people are saying. Do not accept it. Do Mm. not accept it. Challenge everyone. Mm. I am saying कि वो बेहतर है, why? Mm. भाई मुझे बताओ, लेकिन just don't think that you know that you are the, always be learning, always be accepting things. I think these two things will at least take me a lot, like helps me a lot in my career. Mm. I was very hardworking, and you tell me and say in a most rude way about my career Mm. कि जी आप इतने घटिया इंजीनियर हो, आपको ये नहीं आता, आई वुड नेवर, आई विल नेवर बी कि नाराज हो जाऊंगा. मैं आपसे Mm. कहूंगा थैंक यू, आपने मुझे बताया, अच्छा ये मसला है, ये मसला है, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगा. Mm. देन इट वुड मी कि जी अब मुझे, ऑफ कोर्स मैं पागल तो नहीं हूँ, मुझे पता है कि यार ये बंदा मुझसे जल के बोल रहा है, मुझे जहाँ फालतू बात कर रहा है, या ये वाकई सही बोल रहा है. Mm. अगर वो सही बोल रहा है, गुड फॉर मी. अगर बोल रहा है, इग्नोर. Mm. राइट. बिल्कुल. दीज टू थिंग्स. Yeah, I think that's solid advice. And overall, I think we had a very interesting conversation जिसमें बहुत सारी advice and बहुत ज़्यादा practical tips निकली हैं for young individuals. And hopefully this will help them out as well. Thank you so much for your time. And it was lovely chatting with you. No worries. Thanks a lot. Thank you.